yesterday or a day before yesterday he was present, and Ali and Anas was present, and I think you were absent at that. Okay, so I'm going to start from the next topic. Okay, और ये आप खुद ट्राई करना. एप्लीकेशन से बहुत आसान है ना. Just you need to know the formulas of area, surface area, and just you have to take data from any line. Like here, in this question, मैं आपको 10 मिनट एक रिकैप देता हूँ. ओके, एंड आई होप उसमें आप थोड़ा सा समझ जाओ. ओके अली, इसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा सा. सर ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं. या वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. ओके. आपकी फर्स्ट क्लास है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? जी सर मैंने कुछ क्लासेस छोड़ दिया था, एग्जाम चल रहे थे मेरे हिसाब से. ओके ओके. तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ. मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट करा दिया था, बट एंड वी हैव फिनिश्ड few topics. So now I am going to revise these topics quickly, है ना. And I hope you will understand, because ये ज़्यादा difficult नहीं है. If you know the derivative, then this is very easy for you. All right. Okay, so let's start this chapter. Let's take a quick recap about the topics that we have done. So see, in application of derivative, we have a rate of change of quantity. What is rate of change? Rate of change means there is some change in distance with respect to some time. That means you traveled 50 kilometer and you travel 70 kilometer, ना. तो इसका difference होगा 20 kilometer, and this is the difference, and whatever time you took to cover those 20 kilometer is your dt. So this is the change in distance over the change in time, or you can say the total time taken. So this is a rate of change. All right. Now see, uh, we did a question like find the rate of change of area of circle per second with respect to its radius. This is important. With respect to its radius, we need to find the rate of change of area. Okay, so over here in numerator we have dA, and in denominator we have dr. So this is dA, and we know that area of a circle. See, here we have a circle. We have given a circle in this question. So area of circle is pi r square. So simply I will put pi r square and differentiate with respect to dr, because it is said here that with respect to its radius, and it is also given that when radius is 5 centimeter. So you have to derivate this. You have to derivate this pi r square with respect to dr at a particular instant when r is 5 centimeter. So it's just derivated and put r equals to 5 centimeter. You will get your answer. So this is the rate of change of area of a circle per second with respect to its radius. Understood? Yes, sir. Ibrahim, Angelina, Yes sir. understood? Yes sir. Okay, so and okay, so who is not present today? Ali is present, Angelina present, Ibrahim present. Okay. Anas is not there. Okay. So see, in the second question, we did a stone is dropped from quiet into a quiet lake. Quiet lake mean there is no movement, and wave move in a circle with a speed of 4 centimeter per second. So see, what data we should extract from this line, that 4 centimeter per second. That means there is a movement of radius or across the radius with the speed of 4 centimeter per second. All right.
दिस इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है आपको dr/dt दिया हुआ है ना। सी दिस इज सेंटीमीटर एंड दिस इज टाइम, सो डेफिनेटली दिस इज r एंड दिस इज t। So you have given with dr/dt that is 4 centimeter per second. अब आपको क्या पूछा गया? At the instant when radius of the circular wave is 10 centimeter, that means you have given a radius at this instant. How fast is enclosed area increasing? How fast is enclosed area increasing? How fast means we are talking about some time, है ना? How fast? So dt is there, and enclosed area is increasing, so dA is there. So definitely you have to find d over dt. So now you know the area. See, when you drop a stone, in a quiet lake, then ऐसे आपको concentric circles बनते हैं. You know what is concentric circles? Yes, yes. Circles with the same center but different radii. Yeah, circle with the same center but different radii. So here you will get a concentric circles. So आपको क्या बताना है कि आपका एरिया किस मतलब डी आपका जो dA/dt है वो कैसे मतलब इंक्रीज हो रहा है व्हेन योर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एट दिस इंस्टेंट। जब आप कहीं r 10 सेंटीमीटर पे होगे तो उस टाइम पे आपका एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, हाउ फास्ट दैट इज इंक्रीजिंग। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। सो फॉर दैट I will find the dA/dt at r equals to 10. This is the way to write it. है ना? This is a way. If you want at any particular instant, then you can put a slash over here and you can write at r equals to 10 centimeter. So this is going to be d by dt. Area is pi r square. So you will differentiate it. And see, यहाँ पे मैंने chain rule लिखा है. Why I have used chain rule? Because see, this is r and this is t. So if you differentiate pi r square, so this is going to be pi and r square is 2r dot. You have to differentiate this r as well, है ना? R as well using the chain rule. So dr/dt. ये आपको क्लियर है? जिसको डेरिवेटिव आता है उसको ये चीज पता होगी. Yes, yes. All clear? So, Okay. So so just you have to put the values and you will get your answer. That is 80 pi. है ना? तो सेम ये क्वेश्चंस भी वैसे ही है कुछ. इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 cubic centimeter per second. दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सम वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम में कुछ चेंज हो रहा है. सो दैट मीन सी आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है कि हाउ व्हाट इज गिवन हियर, रेट ऑफ increasing at a rate of 9 cubic centimeter per second. What is increasing? Volume of a cube is increasing. That means dv by dt and 9 centimeter cubic per second. Okay, tell me if it was minus 9, then what it mean? If your derivative is plus, then this means this is increasing. If this is minus, then this means it is decreasing. अगर प्लस होता तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, अगर माइनस होता तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज करता. ऑलराइट. yes, sir. सो नाउ यहाँ पे सेम मुझे क्या फाइंड करना है? हाउ फास्ट सरफेस एरिया. सी here we have to find how fast surface area is increasing. So we know what is the formula for surface area. सरफेस एरिया 6a² होता है. पहले ऊपर वाले फॉर्मूले से dv/dt हमें दिया है एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज a². देन वी विल पुट a² हियर. I'll put a² here. a² पुट किया मैंने. उसके बाद ये स्टेटमेंट 9 दिया हुआ था, यहाँ से मैंने dA/dt निकाल लिया. I got dA/dt as a 3/a². Okay. Now I know that surface area is 6a² होता है एंड ds/dt जब मैं करूँगा तो दैट इज d/dt 6a². इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे मैं dA/dt की वैल्यू यूज करूँगा एंड आई विल गेट माई आंसर. दैट इज 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. एनी डाउट? किसी No, को sir. डाउट No, है? sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो रेस्ट वी डिड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना? सेम तरह के क्वेश्चंस किए थे. द कॉन्सेप्ट इज सेम, है ना?
And this is very important question that I have marked here. ये बहुत बार CBSE के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी तक जितना मैंने कराया उसमें से जितना मुझे लगा है ना. So this question is: a ladder is 5 meter long, leaning against a wall. If the bottom of a ladder is pulled along the ground, uh, away from the wall, at the rate of 2 centimeter per second, how fast is the height of the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall? Okay. So इसमें आपका सिनेरियो ऐसा है कि this is a wall, this is a base, and this is your ladder that is given as a 5 meter. Okay. सो आपको बताना है, अगर मैं इस लैडर को इस साइड में मूव कराऊंगा, है ना, इस साइड में मूव कराऊंगा, तो उसकी जो वॉल से वो अटैच उसकी हाइट कितनी तेजी से कम होगी. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. एंड आई गेस दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. बस आपको यहाँ पे एक मेन चीज ध्यान रखना है. जस्ट यू हैव टू यूज द पाइथागोरस. हाउ योर क्वेश्चन इज गोइंग टू स्टार्ट? You have to start the question with Pythagoras. See, if this is your y, है ना, if this is your y and this is your x, so this is x square plus y square equals to 25. All right. And what you have to find, see, how fast is the height of wall decreasing when foot of a ladder is 4 meter away from the wall? That means you have to find this dy by dt. dy by dt find करना है. So just simply differentiate this and you will get your dy by dt. All right. इसको आप एक बार ट्राई कर लेना. आपके एक्सरसाइज आई गेस 6.1 में क्वेश्चन है. Exercise 6.1, question number 10th. Try this at your home. Okay. Sixth question and sorry, 10th question and this 14th one. Okay, so now after this we did increasing and decreasing function. So increasing and decreasing function मैं कैसे पता कर सकता हूँ? Using with the help of derivative. Okay, so today I am going to start with the help of derivative, but in the previous class we did a different method. That अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, सो इफ इफ x1 इज लेस देन x2, तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है f(x1) दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू f(x2). if this condition satisfy, then I will say my graph is increasing, and x1 and x2 belong to this I, and I is as per the question whatever the domain is given. Understood? If this condition satisfies, so this is increasing. If this condition satisfies, that means x1 is less than x2. This is what you have to let. This is what you have to let. And after letting this, if you're getting this result, then you will say that your graph is increasing. And after letting this, if you get this result, then you will say your graph is decreasing. And there is one more term, strictly increasing and strictly decreasing. So by strictly, what do I mean? Strictly mean there is a no leniency. वहाँ पे कोई leniency नहीं है. You cannot include this equal to sign, है ना. आपका ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है, आप कहीं इक्वल टू वाले साइन पे नहीं हो. मतलब यू आर नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यू आर जस्ट अबव द स्टार्टिंग. दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एंड सेम विद द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली में आपका इक्वल टू साइन नहीं आता है, बाकी एज इट इज. सो वी डिड अ क्वेश्चन लाइक शो दैट अ फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू 7x minus 3 is increasing on r. On r mean real number. So this is what we need to prove, that this is increasing. So what I will do, I will consider x1 is less than x2, and I will multiply this by 7, then I'll get this, and I will add minus of 3 both the sides, so I'm getting this. So if this condition is we are getting this condition, and this is what we need to prove. This is what we need to prove. Hence we can say that this is an increasing function. Okay. And I hope you know when this inequality changes, when you multiply a negative number. Is it okay? Sir. So that's it till now. We have completed, and in today's lecture I'm going to start
with the help of derivative, how we are going to find our function is increasing or decreasing? With the help of derivative. Okay. Okay, so let's start. Okay. Okay, so if your derivative is a positive, right? If your derivative is positive, then that means your function is increasing on whatever your domain is given to you. All right. Like, let's take an example. Let's take an example. Let your fx is x cube minus of 3x square plus of 4x, and it is given that your x belongs to real number. This condition is also important because you have to check at this domain whether your condition is satisfying or not. So if I want to prove that this function, or if I want to find that this which function is this, increasing or decreasing, so I will just derivate this. So if after derivating it, I am getting 3x square minus of 6x plus of 4. Okay, so if I 3 if I take this 3 out, okay, x square minus of 2x, and if I write plus 1 here, can I write like this? I just break this 4 into 3 plus 1 so that I can make any square quantity. So I can write this as a x minus 1 square plus 1. Okay, now tell me, is there exist any value of x for which uh, this answer can be negative? Is there exist any value of x belong from real number? x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसपे आपका ये जो फंक्शन डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ जाए? Sir. पॉसिबल है कोई वैल्यू? टेल मी, इज इट पॉसिबल और नॉट? No, sir. नो. रेस्ट ऑफ यू? सर। इब्राहिम? यस सर, यस सर, यस सर। यस, इज इट पॉसिबल? समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या था? जी सर, जी सर। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? टेल मी व्हाट आई हैव आस्क्ड. तो इसके टर्निंग पॉइंट क्या होगा इसका? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा. नहीं सर, आपको ये क्या मेरी मैं लिख आवाज रहा आ था रही है तो ना शायद मैंने प्रॉपरली? सुना नहीं होगा। मैं लिख रहा था क्या कर एक्चुअली रहे थे? इसके लिए। लिख रहा था, मैं लिख रहा था सबको। अच्छा, लिख रहा था. ओके, जी लिख एनीवे, रहा था मैं। लिखने के साथ सुनना भी जरूरी है प्राइम. जी सर जी। ओके. सो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि x की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए ये जो आपका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ जाए? नहीं। नहीं होगा ना? एक्स। व्हाई? बिकॉज नहीं वी नहीं नहीं हैव अ नहीं, स्क्वायर क्योंकि क्वांटिटी. स्क्वायर हो रहा है ना। जो भी हाँ. वैल्यू पुट करेंगे इट विल बी स्क्वायर्ड, एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। या, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज greater than 0 on every interval of your r. So you will say your f is, therefore your f is increasing on your real number, that is your domain, that is whatever it is given to you. All right, any doubt? नो सर। Okay, all of you clear है? सभी को clear है? Yes, यस सर। sir. Okay, so now एक minute. Okay,
Now the second question is, your fx is cos x and you have to tell me that from x belongs to 0 to pi, is this function is increasing or decreasing, and from x belongs to pi to 2 pi, this function is decreasing or increasing. You have to tell me this. Try this question and tell me. Let's see if you are able to solve this. आसान क्वेश्चन है, बहुत हो जाना चाहिए. And after this derivative, after using this derivative method, I will explain you कि 0 से पाई में, and you can take idea from your graph also, है ना. पहले आप, लेकिन अभी इसको ग्राफ से मत करना अभी, क्योंकि आपको cos x का ग्राफ आता है, सो आप उससे मैनेज कर लोगे. यू कैन टेल दैट वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बट जहाँ पे आपको ग्राफ नहीं आता है, लाइक इन द अबव क्वेश्चन, इसका आप ग्राफ बनाओगे, इसका क्यूबिक ग्राफ, तो मतलब पता नहीं कैसा अजीब आएगा थोड़ा सा. सो इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड अ डेरिवेटिव, है ना. सो इट्स बेटर टू यूज डेरिवेटिव इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. डन. Yes, sir. ओके, सो 0 से पाई के बीच में क्या करता है फंक्शन? Decreasing. Decreasing. Okay. And from pi to 2 pi? Increasing. Increasing. इसमें किसी को डाउट है? जी सर, किसको 0 डाउट है? टू इब्राहिम, पाई में डिक्रीजिंग है. अच्छा चलो, हाँ सही है, सही है सर. सही है? कोई डाउट है? जी जी जी, सही है सही है सही है सही. मुझे लगा कि उल्टा था, डिक्रीजिंग सही है. ऐसा मत लगाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना. लगने लगाने के चक्कर में. से दिस इज एफ डैश एक्स, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड यू नो दैट 0 से पाई इंटरवल में आपका साइन एक्स क्या होता है? आपका साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होता है. पता है आपको? 0 से पाई में आपका साइन एक्स बढ़ता है, दैट इज पॉजिटिव होता है. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफी, वट एवर, यहाँ से आपका यहाँ तक 0 से पाई तक, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज साइन इज पॉजिटिव. सो 0 से पाई तक आपका साइन पॉजिटिव होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0 होता है. सो इफ साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव नेगेटिव इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो दिस इज डिक्रीजिंग. करेक्ट. एंड सिमिलरली फॉर दिस वन. ऑल राइट. ओके, नाउ टेल मी अबाउट दिस.
This is a function. You have to find the interval. Okay, you have to find the interval for which your function is increasing and decreasing. And let's see. I want to see how you're going to find this. Yes sir, done. Then जी. बताइए फिर किस तो डेरिवेटिव रेंज होगा 2x माइनस 4, में है ना, 2x माइनस 4 क्या? डेरिवेटिव रहेगा. फिर उसके बाद हम लोग इक्वेट करेंगे 0, x विल गेट अस 2. हम्म ओके, तो हमारा टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है 2. फिर क्या? फॉर द, क्या बोलते हैं, डोमेन माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, ओके open bracket minus infinity comma 2, f dash x is lesser than 0, है या ना. It will be ओके lesser than 0, so it will be decreasing. And then 2 comma positive infinity, it's increasing. ऑलराइट, सबका सेम है, सबको समझ आया? Yes sir. ओके, गुड. So this is in these type of question you need a critical point. Okay. Okay. Do you know about some wavy curve method? There is a method for, I think this method is in competitive exams. Wavy curve method. आपको पता है इसके बारे में? इसे बोर्ड्स में कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज. ओके, नहीं पता ना ये वाला चीज. Anyway, fourth question is you have a function. Now solve this one. I want to see how you will solve. 4x cube minus xx square minus 72x plus 30. You need to find uh, in which particular intervals. First of all, see, when you will get these type of questions, so your main aim is to your first main aim is to find the critical points, है ना? Critical points क्या होते हैं? To find its derivative and equate it to zero. Whatever the points you are getting, that is your critical point. Now across those points, you have to check at particular in interval what your derivative is, है ना? अगर आपका derivative positive hota hai, so your function is increasing. If it is negative, then it is decreasing. So just you have to show this. You have to find the point of point of increasing and point inequality, sorry, interval of increasing and interval of decreasing. Solve this.
Done, sir. Yes, sir, done. Okay. So just verify your answer, okay? So when you will solve this, you will get a equation 12 into x minus 3, x plus 2. So that means you are going to get uh, minus infinity plus infinity minus of 2 plus of 3, okay? So जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या your f dash x is x plus 2. यहाँ पे 3 से इन्फिनाइट तक आपका पॉजिटिव होगा. This is positive. And how you will figure it out that this is positive. आप 3 के बाद कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट कर दो. Like if you put 4 here, so this is 4 plus 2, this is going to be positive, है ना? So this is positive, and minus 2 से minus 2 से 3 के बीच में you will get a decreasing, that is negative, and it is again positive. So आपको ये इंटरवल्स मिलेंगे, जिसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. राइट इट डाउन, एंड उसके बाद आप लिख दो कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, और यू कैन पर्टिकुलर इंटरवल्स. ठीक है, जस्ट यू हैव टू शो दिस. एंड दिस इज नोन एज वेवी कर्व मेथड. ये जो आपने यहाँ पे किया, दिस इज नोन एज वेवी कर्व मेथड. ये आई एम नॉट श्योर दैट एनसीईआरटी में है कि नहीं, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस. दैट बट दिस इज वेरी बेसिक, है ना, बहुत बेसिक चीज़ है. वेवी कर्व में कुछ ट्रिक्स होते हैं, लाइक दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव अगर उसकी पावर ऑड होती है. देखो यहाँ पे पावर ऑड है, ऑड पावर है, सो यू विल गेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. जहाँ पे इवन होता है वहाँ पे यू विल गेट नेगेटिव एंड यू विल गेट अगेन नेगेटिव. बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना, उस पर उतना ध्यान नहीं देना. इतना बहुत काफ़ी है इतना. आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं सभी क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए. ओके, सो ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर. सबका आंसर सही है. Sir. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट, लाइक if you have to write for the increasing, so आप increasing के लिए कैसे लिखोगे? Like for increasing you will write minus infinite to 2, sorry, minus infinite to minus 2 union 3 to infinite, union 3 to infinite. And for decreasing, this is for increasing and this is for decreasing. और ये सिंपल मत डाल देने, up and down वाला. This is just for understanding. This is for decreasing, that is minus 2 to 3. Okay, can someone tell me why this is open bracket? Why I am not considering this minus 2 3 minus 2 minus 3? Why? Tell me. Tell me why this is open bracket. Am I audible? Yes, sir. Why this is open bracket?
Anyone, किसी को पता है why this is open? No? Like if it's close, the -2 and -3 are the critical points. No, so we'll get 0 anyway. So like we don't have to consider -2 and -3. शायद. देखो ऐसा चीज है, से at this particular point -2 पे I have increasing and I have decreasing as well, है ना? That's why I exclude this point and this also. समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you tell me, is this is only increasing, or is this is a strictly increasing? That's only increasing. It's not strictly increasing. Oh, the It's full Only strictly increasing. domain, increasing. it's... Strictly Oh, increasing. acha, ये part is strictly increasing. Yeah. No, I'm asking. किसी का भी सही हो सकता आंसर. Just remember That the depends कि आप concept. कौन से डोमेन पे पूछ रहे हो ना. मैंने आपको Like अगर -infinity to +infinity है तो it's only increasing. okay, let's say 3 to infinite. Let's say 3 to infinite. It's strictly increasing. Strictly increasing. जी, strictly Jirina, increasing. what's your answer? Strictly increasing, sir. Strictly increasing. अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर. तो उससे इस कंसेप्ट की वेरिफिकेशन होती है नहीं होती है कि जब आपका इंक्रीजिंग होगा तब इक्वल टू साइन आता है, एंड जब आपका डिक्रीजिंग होगा तब इक्वल टू साइन आता है. बट इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली यू गॉट ओनली लेस देन एंड ओनली ग्रेटर देन. ओनली लेस देन ग्रेटर देन मीन्स ओपन ब्रैकेट्स. अंडरस्टूड? समझ आया? Yes, sir. ओके. क्लोज ब्रैकेट मतलब you have to include that point also. That is a case of increasing or decreasing, but in strictly you will say this is a open bracket and open bracket है तो वहाँ पे equal to है ही नहीं, and this is increasing. Okay. Okay, just move to one uh, another other question, a little interesting, that your fx is sin x plus cos x. Sin x plus cos x, and you have to find the intervals on which this function is increasing or decreasing, and your x is given as 0 से बड़ा and 2 pi से छोटा. You have to tell on which intervals this function is increasing or decreasing. Just do this and tell me when you got the answer. Done, sir. Okay.
Yes, I done. All of you done? Yes. Everyone done? सबका हो गया? Yes, sir. Ali, Anas is not there. Ali, Angelina, and Ibrahim. All of you got the answer? Yes, sir. Sir. Yes. Okay, so just match the answer, okay? If someone got wrong, then I will solve this question. Otherwise, we will move to the exercise part. So, okay. So your function is increasing when your x belongs to 0 to pi by 4, open bracket, union 5 pi by 4 to 2 pi. Is it correct? Yes, sir. All of you? Sir. Yes. And for decreasing your x belongs to, इसके बीच में जो एरिया रीजन है, that is a decreasing part. Easy? सही है? Yes. ठीक है ना? Okay. Now the question is, say you have learned the concept of derivative and आपको पता है आप डेरिवेटिव कैसे यूज करके किसी फंक्शन की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर को पता कर सकते हो. सो यूजिंग दैट द you have to show that your fx is fx to की power e की power 2x is increasing on r represent real number. Okay, this is your function fx equals to 2x, fx equals to e की power 2x, and you have to find, or no, you have to show that this function is increasing on real number. Just try this one.
answer. Okay. So, tell me which way you solve this question using derivative. आपने इसमें डेरिवेटिव यूज किया है. e power 2x का derivative will have 2 e power 2x है ना. या उससे क्या मतलब आपको I ये didn't तो use इंडिकेशन. sir. हाँ, उसमें यूज होगा भी नहीं वैसे. किसने यूज किया इसमें डेरिवेटिव? इसमें आप डेरिवेटिव करोगे तो 2e⁴ आएगा ना. सो उससे तो कुछ इंडिकेट नहीं होता दैट वेदर दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्योंकि वो आपका सेम फंक्शन जैसा ही है, जस्ट 2 इज मल्टीप्लाइड. और किसी से क्वेश्चन हुआ है एक्सेप्ट अंजलिना? अर्ली आपसे हुआ? Sir, sir, I used the derivative method. डेरिवेटिव कैसे आ सकता है ये बताओ. सी, मैं अगर डेरिवेटिव यूज करता हूँ, इफ आई डेरिवेट दिस, देन आई विल गेट 2e⁴ right? So how can I say this is always greater than 0? अगर मुझे ये always greater than 0 होता, then why I need to prove this? If this is always greater than 0, then this is also. What is the need to prove? So here we can't use derivative. इब्राहिम, आपको पता है कैसे करना है इसको? तो शायद हम लोग इसको ऐसा कर सकते कि x1 x2 दो नंबर्स लें and then या we can do like that कि x1 is greater than x2. जो हमने पहले मेथड किया था, लाइक कंसीडरिंग x1 एंड x2, हमको उस जी मेथड से करना है. वाला कर लाइक हम ऐसे करेंगे कि x1 is x1 greater than मानेंगे, x2. x2 ऐसा मानेंगे, एंड वी हैव अ जी पावर 2x. So I will multiply 2x at 2 both the sides. So this is going to be like this, and e I can power take this देंगे दोनों in the तरफ. power as well. जी 2x1 and e2x2. So this is proved, hence proved, that if this, then this, therefore this is increasing. And tell me whether this is increasing. अच्छा ये बताओ, increasing है या नहीं है? just strictly increasing होगा ना. Yeah, it should be strictly increasing. Although it is asked in the question just about the increasing, but in the answer you can write strictly increasing. ठीक है? जी All of you got the answer? समझ आया? अली, आपको समझ आया? Yes, sir. Okay, Angelina, you did the same way? Yes, sir. Okay, good. Okay, so let me see some questions. Fifth. Okay, let's try this one. Now the question is, we have fx. We have fx as a 2x cube minus of 3x square minus of 36x plus of 7. So this is your fx. You need to find the intervals for increasing and decreasing. All right, just do it.
Done, sir. Yes, not done. 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 Okay. So in this question, okay. So you need to find the interval for increasing and decreasing, right? Ali, आपका हो गया? Sir. So for increasing, okay, so this is okay. Angelina, tell me, increasing के लिए क्या interval है? Minus infinity to minus 2 open brackets, union 3 to infinity. Okay. अच्छा. All right. So that means minus infinite to minus 2 union 3 to infinite. That is increasing. Increasing or it is strictly increasing? Strictly So increasing. strictly increasing. And for decreasing it is Minus 2 to 3 open brackets. minus 2 to 3 open brackets. All of you got the same answer? Yes, sir. Okay, this is right. Okay, so now let's move to next question. Sixth is easy, seventh. This is also easy. Okay. Right. Okay, let's do this one. You have a function y is equals to 4 sine of theta over 2 plus cos of theta 2 plus cos of theta minus of theta. So you have this function y equals to 4 sine theta upon 2 plus cos theta minus of theta, and you have to prove that this is an increasing function. Okay, you have to prove like this is a increasing function of theta in theta belongs to 0 से pi by 2. Theta 0 से pi by 2 होता है. So this is a increasing function. You have to prove this. Okay, solve this and tell me how you will prove this. The first step is always a derivative, then after you will start thinking that what is asked in the question.
Is it done? इसके Doing intervals so. आगे increasing, doing. Okay, Doing wait. so. Done, sir. Okay, all right. So this function is decreasing and increasing for. Just match your answers, okay? सबका हो गया? Okay, you need to prove this is increasing in this, है ना? All right. सबका हो गया prove है? Yes, sir. इब्राहिम आपका हुआ? Ibrahim, Yes, sir. have you done? Yes, sir. Okay. So this is ninth question from exercise 6.2. Neither increasing nor decreasing. Okay. Okay, just do this question. This one. Prove that the function given by fx, this is power 2. Okay, x square minus x plus 1. This is neither strictly nor decreasing, neither increasing nor decreasing. आपको prove करना है. And strictly is also there. On -1 to 1. That is also important. You have some domain.
Then Yes, sir. okay. Angelina, आपको हुआ? Yes, sir. So when you will solve this question, then -1 and 1 in दोनों range में you have a critical point that is half, right? So what you will get for -1 to 1/2, your function will be decreasing when you will solve this by your derivative, and for this is increasing. So what it mean, आपको क्वेश्चन में बोल रहा था it is neither strictly increasing nor decreasing on interval -1 to 1. So अगर -1 and 1 ये ना ही इंक्रीजिंग है, दैट इज ना ही प्लस है एंड ना ही ये माइनस है. So this is neither increasing, neither strictly increasing nor strictly decreasing in this interval, specifically this interval -1 to 1. ये डिक्रीजिंग तो है इस रेंज में, इस इंटरवल में, एंड इंक्रीजिंग भी इस रेंज में, बट कलेक्टिवली ये कोई एक चीज नहीं है. इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. अंडरस्टूड? ऑलराइट. Okay, so now let's move to a new topic, that is maxima and minima. Okay. Okay, how you will get a maximum? How you will get a maximum value? किसी को कुछ idea? So to get the maximum value, we'll take a like maximum value will take a number between 1/2 and 1. जैसे कि 3/2. 3/2 we can take and then we can fit it in f of x. And then I think we'll do like that, yeah. Okay. Anything else? और कुछ किसी को पता? एक second, sir. Maximum value, no, of a function. Yeah. Maximum value Local of a maximum. function. Local Yeah, local maximum. minimum. Yeah, Local maximum. local maxima. Second derivative test say we can do now. Yeah, second Okay, derivative just there. we'll take the critical point और फिर Okay. उसके बाद double derivate करेंगे, and then if the double derivative at that critical point, if it's negative, so the point is Negative. local maximum. Yeah. Local maxima. This is important. When your double derivative is negative, है ना? So in that case, you have a local maxima. Okay. Your double derivative is negative, then you have maxima. Your double derivative is less than 0, sorry, greater than 0. So in that case, you will have minima, local minima. All right. And how you will how you will how you will find the maximum and minimum value? Just substitute the value of your x in that particular equation, you will get maximum, or either you will get a minimum value. ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन से करते हैं. Okay. Okay, what do you mean by extreme points? शायद absolute maximum and absolute minimum. शायद, not sure. Ex uh extreme point. What is extreme?
more than ordinary both. एक्सट्रीम मतलब होता है एट द बाउंड्री, जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, Oh, एक्सट्रीम पॉइंट्स वही होते हैं ना। yes, sir. जहाँ पे सी एक्सट्रीम पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वहां पे आपका फंक्शन इधर मैक्सिमा हो सकता है, इधर मिनिमा हो सकता है ना। सो दैट टाइप ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज एक्सट्रीम पॉइंट्स। नाउ okay, so you have a question. You have to find the maximum and minimum value of a function fx is equals to x cube. X belongs to a real number. All right, just find the maximum and minimum value. Done, sir. Then, so what's the maximum value? There's no maximum value, sir. No maximum value. Yes, And sir. for minimum, 0. 0. Okay, all right. So आपको x square का ग्राफ भी आता होगा, that is something like this. x square का ग्राफ है ना, पैराबोला। So यहाँ पे आप चेक कर सकते हो that your minimum is 0 and your maximum is you do not have any finite maximum. Okay, so यहाँ पे आपको जो maximum है that is a no value, that is no maximum value. All right. Okay, so on the graphical basis, अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊं, so let's analyze कहाँ पे decreasing होता है, कहाँ increasing होता है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे from this point to this point you have graph like this, so this is decreasing from this point to this point, यहाँ तक this is increasing, यहाँ से इस point तक this is decreasing, from here to here this is increasing, and from here to here यहाँ तक this is also decreasing। ठीक है, सो ये ग्राफ होता है जो शो करता है योर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ whether your function is increasing or decreasing. And why this is increasing and decreasing, there is a reason for that. Like when you draw uh, like let's say when you draw this graph, okay,
यहाँ पे आपका जो स्लोप है that is constant, right? That is, sorry, not constant, your derivative is 0. Why? Because there is a no change. यहाँ पे कोई change नहीं हो रहा है. But over here, यहाँ पे this is increasing because your f dash x is increasing, and this is decreasing because your f dash x is decreasing. So this is a graphical representation. And यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे 0 आता है f dash c पे, इस पॉइंट पे 0 आता है. Why this is 0? Because there is no change. और जहाँ पे चेंज नहीं होता वहाँ पे डेरिवेटिव 0 आता है. So this is f dash c equals to 0. Okay. And same with the negative and what, the concave up. Do you know what is concave up, concave up, concave down? I think you are going to use this concept or not. Concave, concave. I think not. Okay, anyway. Okay, so मैं आपको एक और चीज वो with the use of double derivative I want to explain this. Let me just give me a minute. Okay, just solve this one. You have to find the point of local maxima and local minima of a function given by, this is a function 6x square plus of 6x plus 5. You have to find the local maxima and local minima. See, when you will derivate this, you will get 6x square minus of 12 x plus 6. इसके बाद मैं क्या स्टेप करूंगा, मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ so that I can get a, maybe I can get a square quantity. So इसको मैं this is a कैसे, quadratic equation. this is a Quadratic equation तो हम लोग कर सकते हैं ना डेरिवेट, quadratic equation. डबल डेरिवेशन से. हम उससे कर सकते हैं, but that is a another theorem. हमको यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव से ही बताना है, that is मैक्सिमम में फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम. हाँ. So this is going to be positive, है ना? आपका ये पॉजिटिव होगा. All right. And you will get fx is equals to 0 when your x is 1. तो आप बोल सकते हो that x equals to 1 is a critical point. Your x is equals to 1, this is a critical point, है ना? All right. So now you have to observe that your derivative is greater than 0 for what values of x? Check करो. Are you getting this or not? जब आपको critical points मिल जाते हैं, then always draw this number line. This is minus, this is minus 1, this is plus infinity. Now explain this. Tell me, कैसे मैं पता करूंगा
points of local maxima and minima. So we can take a नहीं number समझ आ of left to -1, and then we can find the first derivative of the function. Or maybe इन्फिनिटी have का found the first. So sir, we can हम लोग -1 के we can take point left to -1, and then we'll substitute it in f dash x. Then we'll find okay out if it's positive or negative. I mean, it will be positive. But go ahead. it is positive है ना Yeah. अंजलिना And आपको on पता right of -1 also, it will be positive. it is So going to be positive. is it +1 or -1, sir? This is +1. I guess. Okay, so when you will observe this that your f dash of x is greater than equal to 0 for all x है ना आप x के जितने भी वैल्यूज हैं सबके लिए आपका जो f dash of x है that is going to be always greater than 0, right? All right, Yes, sir. so इसका मतलब आप इसका मतलब जो आपको जो x इक्वल्स टू 1 पॉइंट है दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट सो उस पॉइंट पे क्या होगा अगर ये 0. ऑलवेज इंक्रीजिंग है सो एट दैट पॉइंट नो इट इज नॉट लाइक 0 इट इज अ देखो ऐसा होता है ना कि इसके पहले थोड़ा सा इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है ऐसा कुछ होता है सो इसके इस साइड अगर डिक्रीज हो रहा है इसके साइड इंक्रीज हो रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली दिस पॉइंट सो दिस पॉइंट इज नोन एज जहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा जहाँ पे आपका ओके डू यू नो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे आपका ना ही लोकल मैक्सिमा आता है ना ही लोकल मिनिमा आता है दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ओके दैट मीन उस पॉइंट पे ना ही आपका मैक्सिमा आ रहा है ना ही आपका मिनिमा आ रहा है सो दैट टाइप ऑफ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ inflection. All right, is it done? So, समझ आया point of inflection is a point at which you do not have a local maxima or you do not have a local minima, neither a point of local maxima nor a point of local minima. That type of points are known as point of inflection. All right, so your first step in all in these type of questions is always to find the critical point. Then across that you have to check whether your function is increasing or decreasing, and at x at that critical point you have to check also. So if you're getting increasing, if you're getting local maxima, ना ही आपको local maxima आ रहा है ना ही आपका local minima आ रहा है, so that type of points is known as point of inflection. Okay, and please remember this is slightly important that point of inflection आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस में may भी दे सकते हैं बट इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता है. Okay. Okay, so that's all for today's class. Do you have any doubt? If you have, please ask. no, sir. All clear? Both of you all clear? Yes, Yes. sir. Okay, so in the tomorrow's class, tomorrow we don't have a class. Okay, Wednesday. Okay, so from the next class we will start a second derivative test जिसमें मैं बता रहा था कि second derivative, why we need a second derivative to find whether we have a maxima or minima, है ना. एक हिंट एक वैसे बताता हूँ जल्दी जल्दी कि अगर डबल